Okay, so let us start the class for today. In the morning, we have seen the definition of linear transformation. What is linear transformation? Linear transformation is a map defined from one vector space to another vector space where the vector spaces are defined over the same field. Then a mapping our function from V to W, T, let us call this function T, which is a map from V to W, it's said to be a linear transformation from V to W if for every xy in V and C in F, T of x plus y is equal to T of x plus T of y and T of C into x is equal to C T of x. After that, we have done 3-4 examples in the morning class, and then we have read some properties of this linear transformation. Before going to the next topic, I want you to do some examples from this. Can you verify the second one, whether this is a linear transformation or not? What about first one? T from R to R, which is defined by T of x is equal to x plus 1. Will this be a linear transformation? Please start to verify. आप लोग कर रहे हैं? Are you people doing this? Okay. Please verify the first one and answer me whether this is a linear transformation or not. The first one. नॉइज मेरी तरफ से आ रही है, नॉइज से बेटर है आप लोग क्लास पे फोकस करें. Please do the example and answer me whether that was a linear transformation or not. मैम ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब शायद नहीं है. कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है मैम? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहली वाली ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है. T of x plus y is not equal to T of x plus T of y, right? What about the second one? मैम T of x y is equal to करिए kx ky where k is a fixed scalar. हेलो मैम. हेलो. यस मैम उधर से डॉग बार्किंग की बहुत जोर से साउंड आ रही है. मेरे हाथ में है उसे चुप कराना. नो मैम.
तो बताइए क्या करें, या तो हम अपना माइक ऑफ कर देते हैं। मैम आपके साइड से आ रही कम नहीं हो रहा है। हमारे साइड से ही आ रही है, पर हम उसे जाके चुप नहीं करा सकते ना। यस मैम, सॉरी मैम। मैम सेकंड का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है या वो मल्टीप्लिकेशन वाला जो लीनियर कांस्टेंट से ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैपिंग डिफाइन है टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल यस टू के एक्स के वाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ये प्रूफ वेरीफाई करना है। मैम ये होल्ड हो रहा है, होल्ड हो रहा है लीनियर ना, ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैम, सेकंड का। राइट। थर्ड वाला होगा या नहीं? यस मैम, वेट। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी कोई कर रहा है या नहीं? यस मैम, कर रहे हैं मैम। ओके, मैम थर्ड वाला नहीं होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसका थर्ड वाले का। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रही? दो प्रॉपर्टी है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई एंड टी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी टी ऑफ एक्स। कौन सी नहीं होल्ड हो रही? अगला वाला चेक करिए, फोर्थ वन। सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक बता दीजिए, से एक समझ नहीं आ रहा है कि करें कैसे। सुबह क्लास किया था आपने? यस मैम, शुरू में तो क्लियर कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मैम फोर्थ वाला भी नहीं है। ओके, फोर्थ वाला भी नहीं है, फिफ्थ को ट्राई करिए। यस मैम, फोर्थ वाला फिफ्थ को ट्राई करिए। और आलोक, जरा आप हमें बताइए क्या दिक्कत आ रही है? अभी कोई आप लोगों में से बोल रहा था ना नहीं आ रहा, कैसे करना है, प्लीज हमें बताइए क्या दिक्कत आ रही। मैम इसमें जो डिफाइन किया इसमें हमने इस मैम, बताया कि फिफ्थ वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रही है। ओके, मैम हाँ, मैम यस। मैम ये थर्ड वाला समझ नहीं आया। मैं जब की तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिटिविटी और वो मल्टीप्लिकेटिव वाला वो दोनों फेल बता रहा है। हाँ, तो फेल्ड हो रहा है, डेट मैम मीन्स ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। नहीं है। यस मैम मैम, फिफ्थ वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैम वो थर्ड वाला होगा या नहीं होगा? नहीं, थर्ड वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी ना। यस मैम। फिफ्थ वाला है, गुड। सिक्स वाला फटाफट ऐसे ही चेक करिए सब, सिक्स वाला बताइए है कि नहीं। आलोक, आपको क्या दिक्कत आ रही थी?
मैम इसमें हम ये नहीं समझ पा रहे, जैसे सुबह हमने किया था कि TB1 प्लस B2 इक्वल टू TB1 प्लस, तो इसमें हम नहीं समझ पा रहे कि B1 या B2 क्या है। V1 V2 हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। मैम ये जो लास्ट में लिखा है कि Tx इक्वल टू x डिटरमिनेंट ऑफ x y या xy प्लस 2y, ये मतलब इसलिए डिफाइन नहीं हो सकता है। सॉरी, आपको अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है पूरी। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बाद में लिखा है कि बाई Txy इक्वल टू, इसे सेकंड में Kx Ky, तो मैम ये क्या डिफाइन किए हम नहीं समझ पा रहे, बाकी वो सिस्टम से तो लगा रहे कि जो आपने सुबह बताया था, तो ये वाला नहीं समझ पा रहे कि क्या डिफाइन है ये। फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं? मैपिंग पता है आपको क्या होती है? यस मैम, मैपिंग को सुबह हम लोग डिफाइन करते हैं कि टी एक फंक्शन है, उसमें वो आए थे तो क्या है, जैसे बी और डब्ल्यू, तो बी से डब्ल्यू पे डिफाइन था मैपिंग। हाँ, तो ऐसे ही टी एक मैपिंग है जो v को w से v के एलिमेंट्स को w पे मैप कर रही है। जी वो तो समझे मैम। तो फिर क्या नहीं समझ आ रहा वो बताइए ना। मैम ये वाला जो इसमें जैसे सेकंड में ये टी एक्स वाई इक्वल टू के एक्स के वाई, ये क्या डिफाइन, ये हम नहीं समझ पा रहा है। डेफिनेशन है फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग डिफाइन करेंगे ना। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हुई कि वो जो भी एलिमेंट अगर x को लेता है तो वो उसको मैप करेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पे। सिमिलरली यहाँ पे t हमारे f2 के एलिमेंट्स को ले रहा है, एक्स वाई को ले रहा है और उसको वो ले जाके मैप कर रहा है के एक्स के वाई पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम समझ गया। मैम ये फिफ्थ का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड हो रहा है, मतलब एडिटिविटी और वो मैम दोनों सिक्स्थ वाले का फॉलो भी हो कर रहा रहे है। हैं। राइट, 5 और 6 दोनों है। 7 वाला इसमें सिक्स आइडेंटिटी है। मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग I of x is equal to x is known as identity mapping. आइडेंटिटी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं, वेरीफाई करिए। सेवेंथ वन, मैम सेवंथ भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 8 वाला जीरो मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करती है। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर वी विल यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी विल कॉल इट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रही थी। वी विल जस्ट गिव अ नेम टू दिस स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन। वेरीफाई फॉर दिस जीरो मैप t0 of x is equal to 0 for every x in V. Will this be a linear transformation? यस मैम, This will also be. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। What about ninth one?
मैम ये 9th वाला भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। राइट, 9th वाला भी है। 10, 11, 12 आप लोग इसी पैटर्न पे वेरीफाई कर लेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। यस मैम। Okay, so now we will start new topic because these properties we have already verified in the morning. Now we will start null space and range space. For null space and range space, let us see first what will be the definition. This range space and null space are related with our transformation, linear transformation. So first let us define this formally. Let V and W be vector spaces over F and T from V to W be a linear transformation. Then the set defined by n of t, let us call it n of t, which is defined by collection of elements x in V such that t of x is equal to 0 is known as null space or kernel of our T. And the range space of T, which is denoted by R of T, is defined as collection of T of x such that x in V, and this R of T is known as range space, range or image of our function T, transformation T. So with related to similar to our functions, जैसे जब हमारे पास फंक्शन होता था तो वहां पे भी हमारे पास एक रेंज स्पेस सॉरी रेंज ऑफ फंक्शन आता था, कोडोमेन, रिमेम्बर? यस मैम। राइट, तो जैसे फंक्शन से रिलेट होके हमारा कोडोमेन आता था, द सेम थिंग नाउ वी विल नॉट यूज द टर्म कोडोमेन, वी विल यूज द टर्म रेंज. Range of T, which will be what? Collection of all image set of this x. Image set of this x means for every x, for x in V, we will take the collection T of x and we will form a set, and this set will be known as range set of T. Another set which we will relate with this linear transformation T is known as null space, and this null space will be what? It is defined as the collection of x in V which maps, which gives the zero image under this transformation. For example, if I take this identity transformation, then we have already verified this I of x is equal to x is a linear transformation. And if I want this I of x is equal to 0, then x will be what? For this, I want to calculate null space and range space for this V. (20 to 25), fine. I have defined I identity transformation from V to V, which keeps the definition I of x is equal to x for every x in V. I want to calculate its null space and range space. So by definition, null space says that will be collection of all x such that I of x is equal to 0. Then what will consist of this element? I of x will be 0 when? If our I of x is the definition of this. Please answer. 0. मैम कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर? मैम समझ नहीं आया। See, okay. See, we have defined a linear transformation T from V to W, fine.
and we call this T as a linear transformation. फाइन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हमारी एक मैपिंग है जो कि लिनियरिटी रूल को फॉलो करती है. अब अगर ये मैपिंग है तो इसके साथ ऐसा होगा ना कि ये कुछ की इमेज देगी, कुछ की इमेज जीरो देगी. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, whatever elements it will take from V, it will give some element of W. Let us call it small w. For every x in V, for every x in V, there exists a unique W which will give T of x is equal to W. Yes, ma'am. So, ये W जो होगा ये इसका इमेज है x का under this mapping T. So what we will define range set of our T, our image space, alternatively we call. For the sake of now, पहले range set समझ लेते हैं, फिर हम लोग कहेंगे कि वो image set है या नहीं. Range set हमारी T क्या होती है? वो हमारी सब इमेजेस होती हैं जो जिन एलिमेंट्स का हमें इमेज मिला था उनका कलेक्शन. दिस मीन्स T collection of T of x is such that x belongs to V. So this range set of T contains what? जैसे उसे फंक्शन से समझने की कोशिश करिए. जैसे जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में हमारा डोमेन कोडोमेन होता है ना. See, f from x to y is any mapping, then we call this x as domain. एंड दिस y जहाँ पे इसकी मैपिंग जाती है, इस f को x पे ऑपरेट करने पे जहाँ पे वो एलिमेंट जाता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं. Yes, ma'am. और इस कोडोमेन का एक सबसेट होता है जिसमें केवल इसके इमेज वाला पार्ट आता है, रेंज. Yes, ma'am. Range. उसे हम रेंज बोलते हैं, राइट. रेंज ऑफ f में क्या जाता है? केवल हमारे एलिमेंट्स जाते हैं f ऑफ x टाइप के जिनकी मैपिंग हुई रहती है x in x, राइट, है ना. Yes, ma'am. और ये हमारा एक सबसेट होता है कोडोमेन का, है ना. y का सबसेट हो गया रेंज ऑफ f. Yes, ma'am. Yes. इन द सेम वे t भी तो हमारा एक फंक्शन ही है ना v से w पे. तो इसकी भी करेस्पॉन्डिंग एक रेंज सेट होगी. मैपिंग है तो एक रेंज सेट तो होगी ना जहां पे वो उसके एलिमेंट्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं. So the collection of all images of this x under this transformation T is called the range set of our T. Fine, I can do that. Please answer. ये बात खत्म नहीं. जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई एक कोई फंक्शन डिफाइन किया, कोई एक सेट लिया, पहले x लेते हैं, ठीक है. इसकी किसकी माइक है? Anshika, kindly be on mute. Your mic is creating noise. Please mute yourself. सी, हमारे पास एक कोई x सेट था, ठीक है. हमने इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिए. एक दूसरा सेट y लिया हमने जिसमें हमारे पास 6 एक दूसरा सेट लिया हमने जिसमें हमारे पास
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक मैपिंग हमने डिफाइन की एफ एक्स से वाई पे, जो कि हमारी एक्स से मेंबर्स लेके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x दे रही है। फाइन, दे सकती है। ये मैपिंग हमारी इस x और y के रिस्पेक्ट में वेल डिफाइंड है। x का कोई भी मेंबर लेंगे, हमें उसका एक इमेज y में मिलेगा। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10। Is this a map? A function? यस मैम। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। फाइन, ये x जो हमारा आर्गुमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट सेट को डोमेन, जिसके एलिमेंट को लेके हम मैप करते हैं, और जहां पे मैप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यस मैम वाई का पूरा एलिमेंट को कोडोमेन बोलेंगे ना। हाँ, y और को हम, यस हाँ मैम, और एक्स एक से जो भी मैप हो रहा है वाई उसको रेंज। हाँ, तो ये y अभी जो मैपिंग हमारी डिफाइन होती है, जो इसमें जहां से मैपिंग जा रही है, जिसके एलिमेंट्स को उठा रही है वो सेट डोमेन, और जहां पे ले जाके मैप कर रही है वो सेट कोडोमेन। अब अगर हम कोडोमेन बोलेंगे तो ये पूरा y आएगा। अगर हम यही केवल रेंज ऑफ f बोलें, रेंज ऑफ f या फिर इमेज सेट ऑफ f, इमेज यूज करते हैं अभी, फिर वो ज्यादा क्लियर होगा, फिर हम उसको रेंज बोलेंगे। ठीक है, सी इमेज सेट ऑफ एफ अगर हम आप लोगों से पूछें तो इसका इमेज सेट क्या होगा? इमेज सेट में हमारे वो एलिमेंट्स जाते हैं y के जो हमारे x के किसी एलिमेंट का इमेज हो। यस तो मैम, यहाँ पे हमारा 1 का f, हाँ, 2 तो होगा, यहाँ पे 2 हमारा का फंक्शन क्या डिफाइन था? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो अब हमें बताइए इमेज ऑफ f में क्या क्या जाएगा? मैम 2 4 6 8 10। फाइन, ये हो गया हमारा इमेज सेट। और इसी सेट को ही हम लोग अल्टरनेटिव नेम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग रेंज सेट बोलते हैं। राइट, यस मैम। रेंज सेट मतलब जहां पे हमारी इमेज बिलोंग कर रही है। और जब हम रेंज सेट डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स रेंज सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होता है। However, whenever we are showing codomain, it is not necessary that every element of this codomain is an image of some member of X. क्लियर है अब डेफिनेशन डोमेन, कोडोमेन और रेंज की? यस मैम। यस, ये तो क्लियर है। इन द सेम वे अब टी पे आते हैं। टी हमारी क्या है? एक मैपिंग ही तो है वी से डब्ल्यू पे। एडिशनली क्या है कि ये टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। उन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए टी हमारी एक मैपिंग है। यस, अगर ये टी मैपिंग है तो क्या इसका एक रेंज सेट डिफाइन होगा, जिसमें केवल उसके इमेज सेट, इमेज एलिमेंट्स आएंगे W के? यस मैम। So, with related to this T, there is a set which is defined as R of T, a range set of T, which will consist of all those elements of W which are image of some member of V. In definition form, how we will write? R of T is equal to collection of T of X such that this X belongs to V. Fine, कर सकते हैं? यस। Alternatively, one more set exists in respect to this T, which is defined as the null set of our T. Null set of our T consists of what? Collection of X such that T of, 1 minute, collection of X in V, collection of X in V such that T of X is equal to 0. हाउ इट डिफाइंस, जैसे अभी यहाँ पे हमने मैपिंग डिफाइन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिफाइन किया। अगर हमारे नल सेट की डेफिनेशन ये है तो इसके रिस्पेक्ट में, इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में हमारा नल सेट कौन आएगा?
अच्छा ठीक है, इसको छोड़ते हैं। जैसे हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। दिस इज अ पॉलिनोमियल वेल डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। यस मैम। तो इस ये एफ कौन कौन से एलिमेंट्स को लेके उसकी इमेज 0 दे सकता है? मैम 0 1 2। Right, 0 1 2. So in this R, in the domain set there exist some elements whose image is going to be 0. Yes ma'am. So the collection of all these elements whose image is going to be 0 is known as null set of our T. Fine. Yes. Yes. So now we will again read the definition. Let us see again. Let V and W be a vector space over the field F, and T from V to W be a linear transformation. Then N of T, which is defined as the collection of X in V such that T of X is equal to 0. And this set is known as the null space or kernel of our T. फाइन, अब तो नहीं कोई डाउट है ना इसमें नल स्पेस ऑफ टी में? नो मैम, अभी क्लियर। And in the similar manner there is a definition of range set of T or image set of T, which will be what consist of elements T of X such that X belongs to V, जिसमें हमारे X के इमेज एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये X हमारा पूरे इस V पे वेरी करेगा, और जो एलिमेंट्स इसमें इमेज थे W में, वो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेके हम लोग एक सेट डिफाइन करेंगे, और उस सेट को हम लोग इमेज सेट या रेंज सेट बोलते हैं। फाइन। Yes. Now we want to give some example for this. For example, if I consider the identity mapping I from V to V, we can define I of X is equal to X, right? So if I of X is equal to X, we have already seen that it is a linear transformation. So in respect to that, if it is a linear transformation, the null space and range space will exist, null set and range set. Yes, ma'am. नल सेट हमारा क्या होगा? इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका इमेज 0 हो? I of X is equal to 0. T of X is equal to 0 होना है ना? तो I of X हमारा क्या है? X. This will imply that X is equal to 0. Other than this 0 vector, will there exist any member whose image will be 0 with respect to this identity transformation? Repeat this line again. यहाँ पे हमने जब डिफाइन किया आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग हमारा नल स्पेस और नल सेट और रेंज सेट बिलोंग एग्जिस्ट करेगा। Yes, ma'am. करेगा। नल सेट की हमारी डेफिनेशन क्या है? नल सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स x ऑफ v सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू 0। फाइन। हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारा t यहाँ पे I है। I of x is defined as x. So I of x is equal to 0. Then x will be what? X will be also 0. X will be 0. Other than this 0, will there exist any member whose image will be 0 other than this 0 vector? नो मैम। एक मेंबर तो हमें इसमें 0 मिल गया, इसके अलावा कोई मेंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। So for this identity transformation, our null set is singleton 0. And what will be the range set? I of x is defined as x. So it will be the collection of
I of x such that x belongs to V, right? And I of x by definition it is x is such that x belongs to V. अब ये सेट x such that x belongs to V will be what? पूरा V हो जाएगा हमारा, Yes, ma'am, हो जाएगा. right? Similarly, if I ask for zero transformation is what? Is a mapping defined from V to V, क्योंकि ये किसी भी वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करेगा और हमेशा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी डेफिनेशन कैसे होती है? T of x is equal to 0. दिस इज नोन है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन. अभी आप लोगों ने पीछे प्रूव किया था ना कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. रिमेंबर दिस वन 8 वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमारी रेंज सेट और नल सेट एग्जिस्ट करेगा. व्हाट विल बी द नल सेट एंड रेंज सेट फॉर दिस वन? Null set is the collection of x such that T0 of Null x set is B, ma'am. yes, T0 of x is equal to 0, and since this is a zero transformation, this will give for every x0. Therefore, this will become whole V. And what will be the range set for this T0? Singleton 0, ma'am. Singleton 0. Now, can you find the range set and null set of this one? 3x minus y, yx. This was we have proved. This is a linear transformation. T from R2 to R3 defined by 3x minus y, yx. T from R2 to R3 we have defined how T of x comma y is equal to 3x minus y comma x. I want to know what will be its range set and what will be its null set. For range set, we know that this will contains the elements which are member of this image set. Is equal to collection of T of x such that x, y v लिखते हैं, इजी पड़ेगा. R of t will be what? Collection of T of v such that v belongs to R2. So this will be what? Collection of sets. Image set हमारी क्या जा रही है? 3x minus y comma x such that x comma y belongs to R2. यही होगी ना by definition. Please answer. Yes, ma'am. And what will be the null set respect to this T? Null set will be the collection of x in V such that x, y in R2 such that T of x comma y is equal to 0 वेक्टर. क्योंकि यहाँ 0 लिखने का क्या मतलब है? ये सुबह हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी सुबह नहीं पढ़ा था. T हमारी मैपिंग होती है R2 से R3 पे. R3 में 0 कौन है? उसका 0 वेक्टर. So what will be the value for which this T of xy is equal to 0? T of xy equal to 0
here 0 means 0 vector. This will imply as what? 3x minus y comma y comma x. R3 का 0 वेक्टर कौन होता है? 0 0 0. This will imply as what? 3x minus y is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to 0. So what will be the elements of this null space of this T with respect to this transformation? Please answer. यही होगा? क्या हुआ, आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो मैम, यही होगा. राइट. सो विल यू फाइंड, अभी जब आप लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव किया, इन सबों के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कि किसका, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका रेंज सेट कौन है और उसका नल सेट कौन है? अभी नहीं, होमवर्क में, ताकि हम आगे बढ़ें. करेंगे ना? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है किसी की? नहीं करेंगे क्या? करेंगे मैम. यस मैम, करेंगे. Okay, now we will see some proposition related to this, which says that कि जो भी ये null set और range set हमने find out किया है, ये हमारे केवल set नहीं, सब space होते हैं basically. We will prove in a while. First, let us see what it says. Let VW be two vector spaces over F. And suppose T from V to W is a linear transformation. Then null set of T is a subspace of V and range set of T is also a subspace of W. Subspace proof करने के लिए हमें क्या करना होता है? बोलिए फटाफट. अब जीरो वेक्टर देखना होता है. हाँ, और क्लोजर प्रॉपर्टी. Closure with respect to both operations. Addition and multiplication. यस मैम. Proof of proposition, or let us state the proposition. Let T from V to W be a linear transformation then first one is what? Null set of T is a subspace of V, and second says that range set of our T is a subspace of V, W. So let us prove these results. We have given null of T. Null of T is what? By definition, N of T is equal to collection of X in V such that T of X is equal to 0. Will this be a subset of V? X के ही एलिमेंट्स, अब V के ही एलिमेंट्स का कलेक्शन रख रहा है ना ये नल सेट ऑफ T, तो ये सबसेट होगा V का. यस मैम, सबसेट. ओके, अब सबसेट, क्योंकि हमारा सब स्पेस होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसेट उसका होना चाहिए, तभी तो हम सब स्पेस के लिए अप्रोच लेंगे. If this is a subset of the subset of this V,
Now we will see whether zero vector of this V belongs to this null set of T. Due to property of linear transformation, in the morning we have, T of x is equal to 0, and we know that T of 0 will be what? By property of linear transformation? जीरो वेक्टर हमेशा जीरो वेक्टर पे मैप होता है ना, v का जीरो वेक्टर w के जीरो वेक्टर पे मैप होता है. Yes. This property, first one. So by following this, can I say that zero vector of v belongs to null space of T? Yes. Since T of v0 is equal to T0 of v is equal to 0 of w, this will imply that zero vector of this v belongs to null space of T. तो जीरो वेक्टर तो बिलोंग कर गया. अब इसके बाद कौन सी दो प्रॉपर्टी हमें देखनी होती है? कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें जाना चाहिए ना. वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सबसेट अगर क्लोज हो और उसमें जीरो वेक्टर बिलोंग करता हो तो हम कहते हैं कि वो सब स्पेस है. सब स्पेस क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा. यस मैम. Let x, y be any two elements of null set of T. Then, क्योंकि ये null set के elements हैं, this will imply as what? T of x will be 0 and T of y will be 0. Both will be 0. null set के दोनों member हैं ना. प्लीज आंसर. नल सेट में हमारे वही एलिमेंट्स जा रहे हैं ना जिनकी इमेज 0 आ रही है. Yes. तो अगर हम नल सेट के दो मेंबर ले रहे हैं तो उन दोनों की इंडिविजुअल इमेज भी तो 0 होगी ना. नाउ T of x plus y will be what? T of x plus y. बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें पहले दे चुका है. सो इट विल बी व्हाट? T of x plus T of y. यस मैम. और T of x 0 है, T of y 0 है. So this will be तो 0 plus 0 is equal to 0 vector of w, क्योंकि यस मैम. T of x हमारा w में जा रहा है. So from this can I say that x plus y also belongs to null set of T? इनका x plus y का इमेज भी 0 हो गया ना. एंड फॉर एनी स्केलर, क्या ले, सी ले लेते हैं या फिर के ले लेते हैं, के इन एफ टी ऑफ के एक्स विल बी व्हाट? T of kx will be, by property of linear transformation, this will be k into T of x and this will be k into 0. Any scalar multiplied by 0 vector is equal to 0. W का. And this will imply as what? Kx will also belongs to null space of null set of T. Now see here, null space of T is our subset of V. Zero vector belongs to this null set of T. This null set is closed with respect to vector addition as well as scalar multiplication. Now by our subspace theorem, can I say that this N of T is a subspace of V? Yes. Is a subspace of V, right? Second result says that range set of T is also subspace of W. First, by definition, range set of T will be what? By
definition, range set of this T is equal to collection of T of x in W such that x belongs to V. T of x हमारा W का ही मेंबर होगा ना. T हमारी मैपिंग कहाँ से डिफाइन है? V से W पे जा रही है. T of x जो भी होगा वो W का मेंबर होगा. So this R of T will be a subset of W. Yes or no? Yes, ma'am. Right? This will be a member of W. Now again by property of linear transformation, T of zero vector will be zero vector of W. Yes, होगा. This one, T of 0 is equal to 0. So by using this one, now can I say that this zero vector of W belongs to range set of T? Belong करेगा? Let Tx and Ty be any two elements of R of T. Then T of x plus T of y. By linear definition of linear transformation, what it will be? T of x plus y. T of x plus y और x y हमारे v के मेंबर हैं. x plus y भी हमारा v का मेंबर होगा. अगर ये v का मेंबर है तो ये t of x plus y हमारा कहाँ चला जाएगा? W. W में जाएगा. W के साथ साथ ये W के साथ साथ ये x plus y हमारा ये T of x plus y रेंज सेट ऑफ T में भी जाएगा. Yes, ये ma'am. राइट वाला पार्ट. अगर राइट वाला पार्ट हमारा R of T में जा रहा है और लेफ्ट वाला इसके इक्वल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा R of T में जाएगा? थिंक करिए, थिंक करके बताइए. चीजें हम बहुत सिंपल वे में लिख रहे हैं पर ये आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा कि हम क्यों ऐसा कर पा रहे हैं. सो प्लीज अगेन थिंक, एक्स वाई हमारा v का मेंबर था, x प्लस वाई हमारा फिर से v का मेंबर हो जाएगा और ये मैपिंग हमारी v से w पे जा रही है तो ये x प्लस वाई को भी w में ले जाएगी. राइट. t ऑफ x प्लस वाई हमारा जाएगा r ऑफ t में, रेंज सेट ऑफ t में जाएगा. ये हमारा रेंज सेट ऑफ t में जा रहा है और ये दोनों और ये t ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू t ऑफ x प्लस t ऑफ y. So can I say that now this t of x plus t of y belongs to R of t? जाएगा ना? ये रियल नंबर वाले लिख जा रहे हैं बार बार आराम से. सो अगर tx ty हमने r of t में लिया तो tx plus ty फिर से r of t में जा रहा है. So can I say that r of t is closed with respect to vector addition? Yes, ma'am. With respect to vector addition. सेकेंड हमें क्या देखना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो. सो लेट सी और के ही ले लेते हैं, के लिया था स्केलर पहले वाले में. लेट के बी एनी स्केलर द एंड टी ऑफ एक्स बी एनी मेंबर ऑफ आवर आर ऑफ टी. देन के इंटू टी ऑफ एक्स विल बी व्हाट? Since this t is a linear transformation, k is a scalar, this will be equal to t of kx.
होगा ना, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और k हमारा स्केलर था, x हमारा वेक्टर है, k इंटू एक्स वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा v एक वेक्टर स्पेस है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है। तो ये kx अब हमारा ये जो t ऑफ kx है, क्या ये हमारा रेंज सेट में जाएगा, रेंज सेट ऑफ t में? यस मैम। ये रेंज सेट ऑफ t में जाएगा और ये हमारा बराबर है k इंटू टी ऑफ x के। सो फ्रॉम दिस k in f tx in rt what we have, k into t of x is equal to tk of x and this belongs to r of t. From here can I also say that r of t is closed with respect to vector multiplication, scalar multiplication? Hence W का हमारा सबसेट था, जीरो वेक्टर हमारा RT में बिलोंग कर रहा था, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। सो व्हाट वी कंक्लूड? मैम ये नॉर्मल आर होगा, आपने रियल वाला आर लिख दिया है लास्ट लाइन। आदत पड़ चुकी है उसकी, फिर भी हम इम्प्रूव करेंगे, डोंट वरी। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। Hence R of T is a subspace of W. होगा ना? एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रेंज सेट और नल सेट हमारे सब स्पेस होते हैं। सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कॉल दिस एज अ नल स्पेस एंड रेंज स्पेस, नॉट नल सेट एंड रेंज सेट, क्योंकि सेट तो होगा, डोंट वरी। सेट के साथ इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ रही है कि ये हमारा सब स्पेस हो जा रहा है। So now onwards we will call this as null space as well as range space. Anyone have any objection on this if I call this null space and range space? नो मैम। Okay. नो मैम। Okay. So we will stop the class here. I will give you the homework क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे कब? मंडे को ना? यस मैम। So for till that, please verify each of these, which one is the linear transformation, which one is not. If any of this is linear transformation, what will be the corresponding null set, null space and range space? Will you do that? Yes. Okay. So please take the picture of मैम this. Yes. स्लाइड सब अपलोड कर दीजिएगा मूडल पे। स्लाइड से भी कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज इस एक्सरसाइज का फोटो ले लीजिए, हम जैसे ही होगा अपलोड कर देंगे। सॉरी मैम, हैंड रिटन नोट्स। ओके, हैंड रिटन नोट्स तो हम अभी कर देंगे, नो इशू। Yes, एक्सरसाइज ma'am. की फोटो ले लीजिए। Yes, मैम ले लिया। ओके, थैंक यू मैम। ओके, एनी क्वेरी? नो मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. गुड नाइट।